just discuss it. ये क्लास का बता मतलब ये किया है बी हां ये तो किया है बी इसका कुछ तो कनेक्शन है और इसका कुछ तो देखिए तो ऐसे ही है ना पर फिर ये तो नहीं इक्वल टू साइड से उसका अलग सांस वही लेकिन इसको ये दोनों एक्सप्लेनेशन कोई सुनता नहीं है मैं आगे क्लास से रिक्शा में नोटबुक में इसके जाता हूं कोई सुनता है ये नहीं ना देखिए क्या है चीज स्टार्टिंग में नहीं करना है तो ये आवाज में इसको किससे कॉम्प्लेक्स आ रहा है वही तो बोल रहा हूं एक साइड एक साइड का एक एंगल है पंजाबी रास्ता है मैं बोलूं बहुत तुम लोग को पेटी करना आया मेरे को बता भी करवाया होगा फिर भी मैं ऊपर कर दूं ये देखो कॉलेज में बच्चे की पेटी है ना अबे सारे टीचर्स को ऊपर ही दे पीटी सर तो क्या करोगे करेंगे सब्स्टिट्यूट के लिए मैं हाथ छोड़ तो दो बंदों को दे आएगा सब बड़ा है उसका ए सही में तो ये आएगा ना ये हमारे स्कूल में कौन मैं आज कर में तेरा ए ऐसे सीधी किया सच प्राइवेट बात है अरे इधर तो बोल इसके लिए आड़ा करने बी ए ई कॉर्डिनेटर को सी आड़ा करके ये अरे ये क्या है बदलिंग मेरे को तो मालूम नहीं है सबसे पहले ये उधर पार्टी दे रहा हूं ये बना है सैटरडे को सैटरडे को लगना है को सैटरडे को मेरा तो वही तो अपनी इधर तो इधर हमने कौन सा ऐसा था वो कुछ है आई वांट एक्सटेंड करा दिया ट्रायंगल समझा रहा है ट्रायंगल स्टार्ट करा बोले तुम्हारा f3 = b ट्रायंगल से कौन सा चुप रहे तो 7.7 ठीक कर इतने कम में जाना है उसके बाद bf3 = bc3 उसके बाद अब वही तो खोजना है BBC में मेरे को भी कुछ बढ़िया फर्स्ट टेस्ट में कौन सो फर्स्ट टेस्ट नहीं बस ये एक लोग के देख बहुत से और किया तो ये बराबर से सॉल्व हो जाए देखो का डाउट है इसको तो 7.2 करते हैं हमें मेरे को समझ नहीं आता तो क्या समझ है छोटा ये भी इक्वल तो ये भी इक्वल मुझे अच्छा ही नहीं उसके बाद हम लोग को मेरे को भी मार रहे हैं ए बी एफ प्रॉब्लम को ए डर लग गया पर चाहिए उसके बाद ए बी इक्वल फिर ए बी इक्वल और बी ए सी इक्वल टू सी ये अपना कैपिटल मिस हो गया ना तो ये सब पूछने के लिए शांत बैठे मैं कुछ सिखाना आता नहीं इसको पहले कागज क्या मैं घर पे मेरे मम्मी को डांट कर पूछा रहा हूं मुझसे फाइब्रस सीटी हो गया ये भाई क्या बोल रहा है बायोलॉजी फाइब्रस सीटी मैं लाया ही नहीं सिर्फ टेक्स्ट बुक उठा के chemistry triangle AB is congruent triangle ये तो बहुत आज करके इसको ऐसा कर दिया तो वो दोनों ऐसा ओवरलैप नहीं होगा ऐसा करके हम लोग फिर ऐसा कर पाए ऐसा फिर ऐसा करके ये ऐसा आया फिर इसको समझे ये सबसे पहले ये दोनों आगे मेरा बनाता है शेप मेरा एंगल लेके बॉल की बॉडी सवाल नहीं शांत रहे ये पार्ट आता है ना
प्रूव दैट ये पार्ट अरे ये जितना दबाओगे टेस्टोस्टेरोन की एस्ट्रोजन की ऑलरेडी है ये पार्ट इस ट्रायंगल तो हम उसे कैसे ले सकते सर को पूछो ना दिया है ऑलरेडी AB is equal to BC इसी टू पर इतना पार्ट दोनों का कॉमन है ना ओके इसका ये कॉमन है उसका वो कॉमन है तो वही बोल रहे हैं ना मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे किया कुछ अलग करके नहीं तो ब्रेक हम ऐसे देख के लगा अबे कॉमन है राइट what you are doing guys issues what to be start till fibrous issues fibrous connective tissues then there is the ligaments already done yes then there is fibrous ligament system yes. So what are we left with what type of tissues we are left with what are we left with connective tissues till fibrous tissues we are done just check keep checking bone done cartilage bone cartilage done bone cartilage blood lymph done blood lymph not done okay connective tissues are done nervous tissues I have finished did we finish nervous tissues yes muscular tissues we finished yes epithelial not finished epithelial no epithelial not finished you keep doing some questions I'll be back in 5-10 minutes just give me one pencil and turn to I got already turn to the chapter tissues look into the question section turn to chapter tissues look into the question section very short answer questions number 17 very short answer question number 17 page number 117 very short answer questions very short questions question number 2 number 3 number 2 number 3 muscular tissues done you said no yes then number 5 number 6 number 7 come to the next page 118 blood platelets did I give you no I did not give you come to the next one 118 for 118 question number 13 number 14 number 18 short answer questions 2 marks 18 number 23 worksheet questions come here 119 worksheet questions number 1 number 4 number 5 number 6 now number 4 5 6 you will do in the notebook 4 5 6 you will do in the notebook lastly number 9 okay you keep completing these questions I'll be back in I'll keep the questions here in case you have a doubt you can check from okay अटेंडेंस में साइन करा मॅम एक 10 मिनिटं देते मी सॉल्व करा आवाज नाही पाहिजे पण 10 मिनिटं आहे काय म्हणलं पण काय म्हणलं नाही बोललो
अरे देख लिया तो मम्मी को पता है वही करती है कॉर्नर लगा कॉर्नर वही येड़ा भी हो गया से elements of foliage. Position of slide. Class में आई थी आज सर मैं करता और मुझे काय होता है अबे क्या है किधर फ्लो है और सारी की मां कॉम्प्लेक्स परमानेंट रेशियो ये मैंने काय रखा थी नोटबुक में देख मैंने नोटबुक में जो ये सब यहां पे ऐसे देखना होगा नहीं नोटबुक में सामने लिख रहा है तो वो सीधे उसमें लिख नोटबुक में लिख रहा हूँ किसी भी पेज में खाली लिख सकते हैं स्लैब एंड का तो लोकेशन ढूंढना है ना स्लाइड में लगेगा फाइबर की मैंने लिखा है डेट अरे स्लैब एंड का तो लोकेशन है बेस्ड ऑन कोई बात नहीं होता हुई केमिस्ट्री में जो रिसर्च वाला पार्ट है ना वो नहीं आ रहा है वो नहीं है एग्जाम मतलब सिलेबस से तेरी क्लास में बोला फिर भी इतना सुकून मिला क्वेश्चन ठीक है नेम द पोजीशन ऑफ स्लैडेड टाइम अब उसके बाद का क्या है इनर लाइनिंग थ्रेड्स अरे हम लोग को जीके में जाए अरे नहीं पोजीशन ऑफ स्लैब एंड टाइम बेस्ड ऑन बार नहीं बात तो स्टेप से flowing fibers. Foundation stems are known as fibers. PHLOE. Fibers को बाहर नहीं लगा ऐसा लगा सॉरी यार
Range of leaf or these are common shared around the vascular bundles in the veins of the veins of the leaves and the heart of the seeds and the nuts. Yeah, initially range of leaves and bark of stem or etc. क्या ये मैं छोड़ range of leaf parts of stem inner lining blood vessels हमने कुछ करवाया ही नहीं है तुमने मस्कुलर बोला मैंने देखा कुछ तो बोला लेकिन मैं नहीं छोड़ दो blood vessels नहीं कराया तो पढ़ लियो you need ये rhythmic contraction kinds of muscular tissue और क्वेश्चन क्या है rhythmic contraction each of the cell is unique rhythm में बजता है अरे वो कहना चाह रहे हैं कि अपनी हड्डियां एक rhythm में which type of सारे दोनों को rhythmic contraction नहीं पहले बोलते पर name the tissue which forms वो नहीं प्लेटलेट्स भी नहीं करवाया वो भी नहीं which type of muscles show rhythmic contraction हाँ ये है कॉन्ट्रैक्टाइल एक कॉन्ट्रैक्टाइल ये which of the cell किधर है किधर है किधर है किधर है अबे which type of muscle है ये वो छोड़ which of the cell is uninucleate as smooth muscle or cardiac अरे वो तो कॉन्ट्रैक्टाइल को नहीं पता ये नर्वस टिश्यू होगा ये मस्कुलर टिश्यू कैसे कौन सा टिश्यू पूछा है नर्वस कहाँ चली गई किधर है ये अलग है मसल सेल्स contractile proteins कॉन्ट्रैक्टाइल मस्कुलर टिश्यू में लिखा है कौन सा टाइप देखा मस्कुलर टिश्यू की रहेगा तो क्वेश्चन क्या है कौन सा टाइप रुजा किधर रिलैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स आगे नहीं कोई नहीं तो देखी है कार्डियक मसल लिखो कार्डियक contract देखो रिस्क आ रहा है आपको पता है तो कौन सा है function of blade ब्लेड हां ब्लेड क्या है blood platelets से कार्डियक which of the cell is uninucleate smooth or cardiac और अगर स्मूथ नहीं हुआ तो वो कैसे कार्डियक अरे तो स्मूथ मसल और कार्डियक ऊपर बात नहीं स्मूथ कार्डियक मसल यूनिन्यूक्लिएट है अरे नहीं स्मूथ मसल से ये मल्टीन्यूक्लिएट है अरे तो कार्डियक मसल स्मूथ है कार्डियक मसल यूनिन्यूक्लिएट है यूनिन्यूक्लिएटेड इज दोनों यूनिन्यूक्लिएट दोनों स्मूथ है दोनों किधर बोला कोई अरे कार्डियक में हां इधर भी है एक वो मसल तो वो मैंने बहुत लिख दिया तेरे को कोई लिख रहा है ठीक है peculiar features सुनो बोला कुछ है कार्डियक मसल फाइबर्स it's a cell feature and the corner number देख क्या सुना चलेगा peculiar features अरे हाँ वो भी तो करना है मैं तो भूल भी क्या पॉलन टाइप और प्लैनेट टाइप का कुछ है किधर है अरे पॉलन टाइप क्या कुछ है ठीक है दी कॉर्नर्स एच ये वाला पैरेंट टाइम पॉलन टाइप पैरेंट टाइम पॉलन पॉलन टाइम है वो पॉलन भी नहीं कॉलन है कॉलन अच्छा ये अलग अलग टाइप के होते हैं क्लोरीन पोरेन कैलन होते हैं सोलेन ये अलग अलग टाइप का है पैरेंट टाइप ड्यू टू features of cardiac
कार्डियक मसल फाइबर्स दिया है। क्या दो फीचर्स कौन सा में दो दिया है। अबे दो ही है। लिखो देख एक तो मेरे को मालूम है। तो दे वोलेटाइल कॉन्ट्रैक्टाइल म्यूजिकल बोलते मसल अरे मायोफाइबर्स आर सिलिंड्रिकल इन ब्रांच दे आर न्यूक्लियर हो गया। पेक्यूलियर फीचर मतलब क्या पेक्यूलियर किसको फर्क पड़ता है? वही पूछ रहा है पेक्यूलियर मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है अरे पिलर वाला फीचर बता। वो फंक्शन बता रहे हैं। फंक्शन ये सब ना पेक्यूलियर का मतलब क्या है पेक्यूलियर फीचर देख तो देख P लूचा C U अरे मेरे को स्पेलिंग मालूम है। दो था वो पता है मेरे को डिफरेंट टू व्हाट इज नॉर्मल और एक्सपेक्टेड स्ट्रेंज स्ट्रेंज टायरलेस थ्रूआउट द नाइट टायरलेस क्या होता है बिना गाड़ी ऐसे इंजन पे चलती है। अरे कोई भी है टायरलेस तो बोला तो मुझे क्या बोला टायरलेस गुड नाइट बात पड़ा क्या है मॉर्निंग मेरे को कल आ रहा मॉर्निंग के नशे में टायरलेस नहीं टायरलेस है इंजन पे चलता है गाड़ी से इंजन में चलती है और रिदमिक नहीं भाई रिदमिक एंड टायरलेस रिलैक्स अबे टायरलेस की क्या अरे चुप ना tirelessly working throughout the life. what are such stomata draw a diagram to show elements of phloem क्या? अबे फंक्शन ऑफ स्टोमाटा का अबे कहां पहुंच गया ड्रॉ कर अबे फ्लोएम का क्या है? एक फ्लोएम दूसरा भी क्या लिखा है टायरलेस टायर क्या वो है है क्या मतलब अरे तुम कॉमन डाले मैं दो सेकंड में माइनस के बीच कवर आया इसलिए अरे फ्लोएम फ्लोएम क्या है फ्लोएम फ्लोएम का सॉरी अरे तो दिया है ना ये क्या है तो फ्लोएम नहीं कर अबे मंदिर से भेजना पड़ता है दो ऑपरेशन नहीं करते अबे वो ड्रॉ करेगा ना क्या करना है इसलिए ये हो जाता है एलिमेंट तो एक अरे फ्लोएम का मैंने बताया था मैंने भी अरे बनाया कुछ करते हैं अभी फ्लोएम किधर है रुको मैं तेरे को बता दूं फ्लोएम फ्लोन अवे फ्रॉम माय फ्लोएम फाइबर ना ये देखिए अरे वो बटन का दिख रहा है कि ये हाँ वो भी है अरे मैंने किधर तो ड्रॉ किया तो गायब कैसे हो गया देखते हैं आपका एलिमेंट्स ऑफ नीचे वाला एक दूसरा बोतल से हाथ में लगा वाला है क्या मैंने क्या नहीं रहा फ्लोएम लेकिन मैंने वही नहीं किया एलिमेंट सेम से ड्रॉ कराएंगे what are the elements of blood sieve tubes companion cells क्या sieve tubes और companion cells अरे इसमें डायग्राम रिजल्ट अरे उसको कर दो उसमें डायग्राम में यार कुछ बनाना पड़ेगा मैं नहीं बता रहा इसका बोलना मेरे को नहीं आता तू ड्राइंग सिखा दे आर्ट के टीचर है बायो टीचर सब रिकॉर्ड हो रहा है सुन अरे भाई बहुत पूरा नहीं करना पड़ता है तो वो छोड़ दो अगर वो डॉट से बनाने के वो भी बनाने का वो बनाने की और तेरे का ऐसे लाइट मैन तो बैठ जाएगी अरे बना के दिखा दो बना अब तक दूसरे आंसर कर क्यों ये एक साथ जाएंगे नहीं तो फंक्शन नहीं जाएंगे तो मत फंक्शन ऑफ स्टोमाटा नहीं गाड़ी आंसर नहीं लगा के दिया तो आगे नहीं वो स्टोमाटा की फंक्शन ही नहीं दी थोड़ा सा फंक्शन का दिया है ना तो अरे वो क्या है से अरे देख रहा हूं उसको क्यों देख रहा है अबे ये तो है फंक्शन क्या है मैंने कुछ नहीं बोला वो सीधी का हाल मुझे कर दी फिर करके ना घर पे भी हाल हो रहा है
हमें बोले कि आपने से प्रोस्टिट्यूट करके मेरे किसी का शौक नहीं बात करके दिखा अरे लगता बेसिकली नहीं क्या है अरे बोलेगा उसने ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं पाया वही तो बात लिखना है ना rules in decentralized classroom distribution of लगाना क्या पंपिंग वो लिखा pumping and distributing blood to various parts of the body. Developmental time is relax rapidly. contract and relax protective tissues कौन से रहते हैं protective tissues जिनके पास protection है सर वाह 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 अरे वो वाला नहीं तो दो 5 स्टार दो लोग बोला protective tissue मैंने बोला वो जिनके protection होता है आगे ये गलता नहीं निकल जिसके पास एक आ रहा है मेरी गाड़ी को ये तू किस तरह बात है यार तेरे को देखने के उधर दौड़ इधर रोने वही तो समझा आगे उधर ये प्रोटेक्टिव टिश्यूज कौन से अपने पहले 20 जो भी है वो तो नहीं लिख लिया मैंने वापस फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा हां कैंसर लेक्चर ए ये तो केमिकल सेंसिटिविटी दे बहुत टेलीफोन बना बोल देता भाई वो छोड़ भाई क्या है डिस्क्राइब नहीं उसने डिस्क्राइब किया लेकिन हम सब नेम करेंगे describe the productive tissue अरे नेम describe the name. तू टीचर बने ना बच्चे फेल होने वाले अरे तो बात नहीं है ना एपिडर्मिस और कॉर्ड लिखो अलग क्लास दो पेज नंबर क्या है कॉर्ड सॉरी एपिडर्मिस और एपिडर्मिस दो कॉर्ड एपिडर्मिस और ये वो अबे पेड़ का टुकड़ा कौन होता है इसको क्या प्रोनाउंस करेगा कॉर्ड शॉर्ट अरे कॉर्ड तो वही तो बोला मैं कॉर्ड मैं बोल रहा हूँ कॉर्ड कैसे सेल हो सकता है टिश्यू कैसे हो सकता है कवर्ड बुक नहीं खोपड़ी एक सेल कौन कैसे बना एक सेल है सिंगल सेल है वो लॉयल तो मैं तो उसको बोल रहा हूँ मैं तो वो बोल रहा है इसलिए तो उसको बोल रहा हूँ अबे कौन सेल ही होता है तू आसमान में तू अलग ही रिटायरमेंट ले अबे चांस तो हो रहे हैं ये टाइटल और प्रोटीन क्या हो ये टाइटल और प्रोटीन ये क्या है ये उससे होता है देखो हेल्थी नहीं प्रोटीन क्या बोल रहा है एपिडर्मिस और स्टोमेटा इज प्रोटेक्टिव टिश्यू वो प्रोटेक्टिव टिश्यू लीगल तो एपिडर्मिस हां भाई वो एपिडर्मिस के अंदर ये टाइम है वो बराबर एपिडर्मिस के अंदर का कौन ए कॉर्ड टिश्यू है अरे टिश्यू कॉर्ड हेमोबॉडी ट्री क्या बोलता है टिश्यू कॉर्ड एपिडर्मिस और स्टोमेटा लिखो कसम करो किधर से इसको बेटा अबे तेज टाइम से तो अबे पीछे मैं तो मत तू अपने तो ग्रेड बन गया है वीडियो दे जैसे नहीं स्टोमेटा होगा क्योंकि आप इनका फ्यूचर बन रहा है बहुत बहुत जल्दी आ रहा है आपको मैं पढ़ रही हूँ एपिडर्मिस से आगे बढ़ते हैं तो हम और क्या बोल रहे थे हमने स्टोमेटा पढ़ा तो नहीं बोला अरे ये सबसे स्टोमेटा करवाया और लिखता है कि जिंदा नहीं ये एपिडर्मिस है कॉपी है नहीं मैं स्टोमेटा नहीं ये दोनों थे इधर अंडरलाइन किया ये दो इसके पार्ट है हाँ मैं वही बोल रही हूँ इधर अंडरलाइन किया अंडरलाइन अरे इज बाउंड बाय स्पेशलाइज्ड
एपिडर्मल सेल्स मतलब बाउंड है मतलब गार्ड है वो गार्ड प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है इसके पास एक मेरा बात सुन मैंने वो बात है एक बार तू ना बोलिए मेरा बात सुन बिल्कुल वो पता नहीं है सुन वो सब छोड़ दे यहाँ पे देख गार्ड सेल्स गार्ड का प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन इनके पास गार्ड सेल्स है इधर डायग्राम में दिया है इंस्ट्रूमेंट है क्या है एपिडर्मल सेल को वो कौन है हम बोल रहे टैक्सी बोल रहे यहाँ पे फैंटा बोल रहे अंडा बोल स्टोमेटा के उसमें किधर प्रोटेक्टिव लिखा है मेरे को दिखा गार्ड प्रोटेक्शन प्रोवाइड रुक तेरे सोसाइटी में कौन है अरे वो अपना नाम हो रहा है मैं पेन ले रोज घूम अरे एक दिन उसी तरीके से आया उसकी लेकिन ये सबसे पहले क्लास में आया ये सबसे पहले क्लास में मुझे देखो कंप्यूटर को ये पेन क्या है ये आई ये पेन क्या है जी अब याद है बेस लाइन पढ़ा कर अरे तो हो गया ना मैं लिख दिया ना शाबाश Describe 10 types of अच्छा हो गया पहले में लिख सकते हैं which is become is clear and time is clear what do you describe the type of fish आगे हाँ ये clear and time इसको describe कैसे करें लिखनी उसका फंक्शन लेंगे हाँ लिखनी और सब लिखनी एपिडर्मिस प्रेजेंट इन अदर प्लांट्स और स्क्लेरेंटाइमा कॉलेंटाइमा ये दो में अंतर बता चलेगा ये देखिए थर्ड और हां ये स्क्लेरेंटाइमा कॉलेंटाइमा और में एक ये ग्रीक प्रेजेंट आउटर और वाले हाथ करते जाते हैं चलिए हम साले स्लाइड में बोलेंगे में दिया है लिखने की जरूरत नहीं है ठीक है मास्टर करेंगे अबे सब कुछ ही है जितना मतलब ये ना सब नोट में दे किसी को चाहिए मेरे सामने यार सुनिए देखो मुझे लगे गॉड समझ टंटा ने लिखा मैं आपको आप बोलना ऐसे देखिए पर काट के खा लिया अपना जब सॉरी कर ले सब ये नहीं हो पाएगी उसमें तो कोई तो मैंने अरे सब अपनी डेट स्टैंडर्ड मैं इधर रूम को इधर बैठी हूं तो क्लास में वो ये टीचर अरे घर में इधर बैठी और मैं इधर बैठा इधर से उसका पेपर दिख रहा है लेकिन उसका नाम क्या है वो दिख ही नहीं रहा मेरे को मैं कैसे लिखूं ये एनबीएस एस आई इज ऑलवेज मैं बोला बोलिए हां बोलिए फिर उसका और सर एक तो मेरे को दोस्त पहला डालो करके अरे वॉशरूम के लिए परीक्षा नमस्ते शुरुआत चल रही ये बोल रहा हूं देख क्या अरे एक से जो शक्ति होगा वीडियो बोल देंगे साथ में हम साथ हैं हम जो भी करेंगे साथ में करेंगे हां सुनते हुए भी सब थ्रू होता है कुछ ऊपर भी नहीं जाता सब थ्रू होते जाता शाबाश अबे ब्लैंकेट की बात कर रहा हूं सुनो बोल रहा नहीं तू क्या तो लड़का है और लेकिन 24 से लड़का नहीं लड़का नहीं ये मेरे पास है इसको मेरे प्यार इसलिए मेरे से कर सकते तो आगे बोल बहुत कुछ
ज्यादा शादी करेगा न्यूज़ पे जाएगा बच्चे बच्चे लेगा अपने जैसे अभी कल जब रात में सोऊंगा तब मेरे बच्चे आएंगे उसका नहीं सोचा है वो उतना इतना अभी तक मैच्योर नहीं हो उसका अरे नहीं तो बता उससे करे सकते 70-80 का होता है और तुम्हें मतलब उसमें ऐसा आता है क्या हो जाएगा क्या करे इस बार कुछ सस्ती चीज देख 70 रुपए का होता है 70 पे 70 अरे तो इसका नाम क्या है गाइस पूछ रही है मेरे से बोल दिया मेरी दोस्त ने किया तो मेरी दोस्त अभी तो उसने तैयार नहीं किया ये बात और मेरी दोस्त ने अभी किया 2 साल पहले किया उसने पहले है ना फर्स्ट टाइम विदाउट बैन सेकंड टाइम कर दी भाई वैसे कुछ नहीं होता तुम बिना में भी प्रॉब्लम अबे तो अच्छा, बाहर तो क्या करेगा हां भाई है ना तू और मेरे बच्चे को स्कूल में रख के पढ़ाया मेरे क्या बोल रहा है तो वही तो बोल रहा हूँ बहुत रिस्की होता है वो लेकिन हो सकता है नहीं तो है आइसक्रीम चालू हमने भी बोले आपने उधर सुने नहीं उधर देखता है पूरी फसल हमने तेरे को बोलने देंगे टेंशन है मेरा आज तो क्या बोलना कंक्लूजन तो बताना पड़ता है इस इंट्रोडक्शन और बॉडी कोड के बारे में कंक्लूजन तो बताया फॉर्मेट क्या है एक्स्ट्रा सिबलिंग्स अरे तू जो बोल रही तू खाने को क्या चीज सुना है तो तुमने पूरी स्टोरी में कितने बच्चे एक भी कितने कॉर्डर है प्रॉब्लम होता है यार देख रही जेन्युइन सैटिस्फैक्शन अरे वो बात नहीं ये होता है होता क्या है अरे वैसे अबे क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहा है नेम द केमिकल सब्सटेंस व्हिच इज डिपॉजिटेड इन द मोल्ड ऑफ तो बच्चों को आप ध्यान दे रहे हो बच्चे बड़े अरे तू वही को ए अगले साल बच्चे को 70 रुपया तक हजार के बाद छोड़ दे जी उससे अच्छा खुदे उससे अच्छा उनके सामने तो बहुत इससे बच्चों से भाई बहुत क्यों जल्दी बोल रहा है तुम्हें मत चाहिए तो यूज जब तुम लोग का एक लास्ट ईयर होगा वो खत्म होने का होता है ना लड़कियों का तो भाई हां ये अरे रुको एक मिनट था मैंने चेक किया कि हम देख रहे हैं एटलीस्ट 35 तक तो नहीं है तो इससे जब वो बच्चा ये बड़ा स्टोरी है है ना मेरे क्रश ने ऐसे पॉइंट से पढ़ ली इसलिए तेरे को पसंद नहीं करता देंगे तो सोचे उसको फिर जाऊंगा क्रश किससे हो अरे ये मैंने हिंदी में ना मेरे साथ मैंने बोला ऐसे इन जनरल अच्छा लोग पता है किसका सब करना है कुछ भी तो पता है किसका सब करना ए क्या बोले अरे लिखा हुआ है यार हां वो नहीं है छोड़ लिखो ना दो पढ़ लिखो दो पढ़ के तो अरे लिख देते जल्दी से फिर टाइम पास कर लेंगे एक बार खत्म हो गया तो ये स्टार्ट का अरे कोई बार हटा दो मैं मेरा हटा दे अरे प्रिपेयर का बात करके भी ना हो कुछ नहीं करते इसके ना सिर्फ वो मेरे को वो ऐसे करती फिर वो अंती लगा जाते हैं उसके ऊपर अरे वो अक्सर करती है ना फिर वो ऐसा मुझसे वैसा वो स्क्रैचेस वो ऐसा फील होता है ना वो ऐसा काम होता जाता है इधर
और ये तूने किया कभी फ्यूचर प्लानिंग इसके तो स्टोरी भी बोल रही हूँ एक डायरी में होगी ना नहीं हमें मैं ऐसे ही बस मिडल पे मार के लिख दिया नहीं ये अगर मार के इतना आप बन लेने का बहुत कुछ आता है सही है पूरा स्टोरी बनना तू ना तू हम लाइव है जनता सॉरी जनता नहीं है कोई वहां पे रिपोर्ट है इसका वाला चल रहा है पीएम बोल रहा है चाचा जी इधर आओ कुछ डिस्कशन करें पीएम मोदी जैसे बात से लेकर वैसे कुछ नहीं बोला मैं आज में ये 100% सच बोल रहा हूं साल का ये सही में लिख दिया है और बोली करनी चाहिए वो बहुत पढ़ता है लिंक ज्यादा लिंक नहीं इसको पता है लिंक लिंक की बात है इधर ये तो फंक्शन ऑफ हाजीपुर क्या बड़ी समझ आता है डिफरेंस एडी को स्टेशन हाजीपुर स्टेशन पढ़ रहा हूं एडी बॉक्स इससे कुछ नहीं हो इसके अंदर अरे ये कितना छोटा अभी मुझे याद है लिख रहा मान लीजिए इंग्लिश में ए स्टैंडर्ड सब लिगामेंट का क्या है वो टंडन लिगामेंट होता है लिगामेंट अभी उधर पे लिगामेंट लिगामेंट क्या होता है लिगामेंट झाड़ू होता है लिगामेंट झाड़ू के और अगर वो कहीं और हुआ तो कनेक्टिव टिश्यू आगे आ जाए हाँ मसल्स भी होते हैं मसल्स आप भी होते हैं इसको क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं अरे वो तो झाड़ के फांदे रहती है वो मसल नहीं तो ऐसा ही अरे वो कार्यक्रम में होता है पेड़ इनका छोटा इनका छोटा भाई मैंने कल बिना तो मूवी फोटो दी क्या अरे वो लड्डू बनाते हो देख लिए थे चुटकी को बजा दिया था दूसरा एडिशन वाला है हाँ वो वाला तू लिख के रख तो छोटा भी देख लिया जाएगा प्रॉब्लम नहीं होगा तो ध्यान से देखिए हाँ क्या आता है सिक्सटा नहीं अरे वो है ना इधर दिया हुआ है उसने बहुत लॉन्ग है हाँ वैसे ये बोल हाँ मैं बोल रही नहीं अरे तीन दो ही पॉइंट शादी करना बोलूंगी कि तो लोग अगर क्राइटेरिया नहीं होगे तो मैं चेक नहीं करूँ शादी तो मत करिए नहीं ये सब तो तेरे को पता है 10th में माना करा बच्चों को टीचर के अकॉर्डिंग ये होना पड़ता है टीचर ने हमारे अकॉर्डिंग चेक जैसे टीचर होगी कैसे डिक्टेटरशिप नेपोलियन बोनापार्ट की फिल्म ये भी नेपोलियन प्रॉमिस किया है वो भी नेपोलियन ही है वही तो मैक्सिमम वाले का तो तो सब
नहीं यूरोप के हम लोग हम चारों यूरोप की कंट्रीज रुको मैं समझ में अरे मैं बाजू में हो रहा हूँ उधर कोई चल रहा है तू जहाँ अंदर मैं खड़ा था थोड़ा बाहर में कॉन्सेप्ट के अंदर जाके निकलना चाहिए ठीक है मैं अंदर तो वॉशरूम तक कोई नहीं हमारे बच्चे लेकर डिजाइनर क्या कपड़े बनाने हम तो क्रिएटर हैं कैसे यार मेरे को स्कूल में जाने का नहीं है मेरे इंग्लिश को मतलब से बच्चे बहुत अच्छे होते हैं और मैं इतना बच्चों लिखने में इतना दिमाग खराब होता है ना क्या अबे 6-7 महीने तक एक साल तक तो चला आपके उसके बाद नहीं बच्चे ही बहुत इरिटेटिंग स्पेशली टीनेजर्स जो हमने हमें खुद ही प्रयास कर सकते हैं हमें खुद शर्म आनी चाहिए सीबी चुप्पी हुई वो एक बात हो गई नहीं ये तो वही बात होती है नेपोलियन बोल रहा है मेरे को डिक्टेटरशिप करना मोटा मार रॉबेस्पियर बोलता है कि मेरे को बुलेटिन से बहुत नफरत है डॉक्टर की लेकिन नहीं है और इसका वही मतलब है डॉक्टर बुलेटिन बोलता है एवरी ऑफिस बुलेटिन और फिर वो अरे मैं नहीं वो निकाल दिया मैंने बस एक से बाकी था एक ही गंदा क्या अगर वो अकेले ना बात की ज्यादा कहीं तो देना चाहिए कोट ऐसी क्या नहीं करे आधा वापस ले जा यो धक्का देने की बात कर रहा हूँ यार एक सर काट दे चंपल ऐसा मारने से पकड़ के चले काट के क्यों मेरे किधर पड़ा है मेरे किधर पड़ा है कि कैसे का मेरे को क्या गुस्सा हेडर मारा कितना है पता चलता है स्पेशल केस को ना बोली अरे नरेंद्र ठाकुर देखिए नरेंद्र सर वो भी अरे हमारे झगड़ा में उसके पास तो लाल वाला भी वही लाल सर ने तो वो सर ने दिया वो रघुनाथ को बोलना चाहता इसका क्या है इसका क्या है क्या करेगा ये कैसे राउंड लिया होटल में बैठे लाल कुछ ही होता है क्या मेरे सारे अरे देख उधर गिर गया ठीक है तेरा करे वो बड़ा यहाँ पे नीचे दो गिरे पड़े काले वाले काले वाले बराबर ये भी रखना फेंक दिया अकेले इधर ये लास्ट वाला नहीं होटल का ना नाम ये लास्ट वाला नहीं आता ऐसा बिल्कुल है ना सर्च में देखिए हंसी भी आई मेरे को इससे हंसी देख के हंसी आई इसका विजिटर का नाम वो बॉयज मेजरमेंट बॉयज लेकिन लेकिन टाइम पास के लिए बार-बार गोल्डन वाला भी है इसके पास यार
गोल्डन तेरे को अबे ट्रायल बस के लिए तेरे को तेरे को ऑब्वियसली अभी तक लेटेस्ट अपडेट निकला सूट करो तो पूछना पड़ेगा मैं बोलते बंदे ने समझा एक क्लास नहीं ये तो बात इसी तरह इधर अभी सामने वाले क्लास में पीछे वाले क्लास में कितने क्लास हो रहे हैं 4 क्लास से 4 सब बाजू के क्लास है हमारे जीएच वो भी है डी उसका क्या है डी एकदम हम सुंदर से डी इधर है डी बीच में और सी उधर है सी उधर है कहना क्या चाहते हो सही है वैसा प्रॉब्लम है एक ही फ्लोर है हाँ एक ही फ्लोर रुक तेरा स्कूल कैसे है अरे तू मेरे को फ्लोर बना के दे रही ये क्या कर रहा है आज भी बन रही है ऐसा नहीं है हाँ अरे लोग समझ जैसे यहाँ से अंदर आ रहे हैं यहाँ पे मेरा क्लास यहाँ मेरा क्लास ठीक है मोमेंट थोड़ा एक्सटेंड कर ठीक है यहाँ पे एकदम होम जो है सी यहाँ पे फिर बाथरूम बॉयज अरे बता रहा था बॉयज का भाई साहब वॉशरूम भी होके रहते हैं तो यहाँ पे है ए ये बी यहाँ पे है बी यहाँ पे है सी ऐसा क्या ए बी सी तेरा डी ये ए और ये सी और देख अच्छी बात क्या है टीम है ना वो तो मैं जब ये क्लास में था और ये क्लास में थी तब ये क्लास एक थी तो जब ऐसा हुआ था तो लाइक एक और बंदे को क्वेश्चन देखो तो क्लास एक से अलग हो जाएगा ये बंदा दूर हो गया तो वो लोग भी क्वेश्चन दूर देखो मेरा हो जाएगा तो कहना क्या चाहते हो जैसे समझ नहीं पा रहा ठीक है दरवाजा क्यों बंद किया ये लो मैंने लॉक हाँ वो लॉक द रूम नीड कैसे नहीं है वो लॉक द रूम हाँ दिस इज योर हाउस लॉक किया रूम क्यों किसने लॉक किया रूम घर पे भी रूम लॉक करके बदमाशी करने की आदत है ना हाँ एंड यू आर प्रैक्टिसिंग इट हियर आल्सो या हाउ मेनी क्वेश्चंस होगा लास्ट any doubt in any of the questions the diagram is of phloem elements of phloem means that particular diagram of phloem where you have to label companion cells, sheath tubes, sheath plates, phloem parenchyma. That's it. Entire thing. This time. Draw and label. You are asked to draw the diagram in your paper. Draw. Sometimes you will get for labeling. Sometimes you will get the paper, get the diagram in the paper and X, Y, name X, name Y, write the function like that. Sometimes full 3 marks for the diagram. Come on, finish now in 2 minutes. Let us continue. Give the function of blood platelets. Clotting of blood. blood platelets We have not finished. We have to complete that. So I don't think so. I have given that question. Did I? I don't think so. I gave? Okay. So we finished with what? Ligaments and tendons, you said, no? Ligaments and tendons, connective tissues. Let us continue. Connective tissues, I have finished blood and lymph. What are the types of connective tissues I finished? Connective tissue proper? yes ma'am Areolar adipose? yes ma'am And skeletal connective tissue, bone cartilage? no fibrous is done in fibrous tendons So that's it. No? So let us start with the third type now. We have to look into the third type now. The third type is skeletal connective tissues. Skeletal connective tissues. Skeletal connective tissues, what are the types? Skeletal connective tissues, first is bone. The two types of skeletal connective tissues, one would be bone and second would be cartilage.
Skeletal connective tissues, two types, bone and cartilage. Okay. Now, when I talk about bone, where are bones present? Bones are present all over the body. Bones are present all over the body. What next about bones? When we talk about the bones, they are made up of deposits of calcium and phosphorus. They are made up of rich deposits of calcium and phosphorus. Rich deposits of calcium and phosphorus. Next is they are rigid. Can we talk about any degree of movement for the bones? No, the bones don't show any movement. They are extremely rigid because they are made up of deposits of calcium and phosphorus, which makes them hard. What are the cells known as? The cells are known as osteoblasts. The cells are known as osteoblasts. What about their function? Bones. Bones provide or responsible for framework of the body. Bones are responsible for the framework of the body. What do? They help in the framework of the body. Comparatively, when I talk about the cartilages, where are they present? Cartilages majorly would be present at the joints. What are some of their locations? Cartilages are majorly present at the joints. They form the external ear. And the tip of the nose. External ear and tip of the nose. This is the cartilage that we know. The bone is only till here. This is the cartilage which gives a framework. And where else the cartilage is always present between any two bones. Everywhere. I talk about the bones of the fingers and the toes and the hands and the legs and the shoulder and the vertebral column, everywhere. Cartilage. This cartilage is also consists of mineral deposits, calcium, phosphorus. They are also made up of mineral deposits. Cartilages are also made up of matrix and elastic fibers or collagen fibers. Next is they are comparatively flexible. The cells, the names of the cells I am giving you, but then the names are optional. It is not there in the book. Optional for you. If you can remember, very good. If you don't remember, not a problem. Chondroblast, what are the cells of the cartilage known as chondroblasts? And these are loosely arranged cells. The cells of the cartilage loosely arranged. What type of function cartilage? If I have to mention the function of cartilage, what does it help in? Function of the cartilage. How does cartilage help in? Prevents friction between bones at the joints. And also helps in forming a framework if I talk about the ear and the nose. So basic differences between the cartilage and the bone. Now something more to remember. If I talk about the cartilage or if I talk about the bone now, they possess blood vessels and nerves. What about this side? Cartilage do not possess blood vessels. And nerves.
So these are some features about the cartilage and the bone to remember, and some differences. I have already given you some differences right here. How many differences here you can find out? Tell me how many differences about the bone and the cartilage? Number one. They are developed all over the body and cartilage. Number two. Number three. Rigid and Number cartilage four. The name of the cell. The cell names. The cell names, but the cell names are optional. I gave you in your NCERT book. It is not there, especially the name of the cartilage. This remains optional. If you are able to remember and write, very good. You are not able to remember, not a stress at all. So we talk about cartilage and bone. These are types of connective tissues, but what type of connective tissue? Skeleton, because we are talking about framework in both. Wherever they are present, they generally give a shape, structure, form, framework. Now we are talking about the fourth type of connective tissue, that is the fluid connective tissue. The fourth type of connective tissue, the fluid connective tissue. The first type of fluid connective tissue we are going to talk about would be blood. Tell me 4 points about blood that you have read about somewhere, sometime. 4 points about blood. Fast. What is the color of the blood? What is the blood made up of? You have read? Blood is made up of hemoglobin. Open the window and throw you from there. Blood is made up of hemoglobin. Blood is made up of cells. You have come across 8th standard, 7th, 8th. Blood is made up of cells and liquid part. There's a liquid part. No, in the blood, we feel that the blood is just liquid. Remember, it seems that the blood is liquid, but then is the blood just a liquid? The blood is consisting of the liquid part. So the blood has two components. What are the components of the blood? What is the composition of the blood? The components of the blood. First is we talk about the plasma. The blood is made up of plasma. So what are the components I'm talking about? The first is plasma. How do you define plasma? What is plasma? Plasma is the liquid part of the blood. Plasma is the liquid part of the blood. What is it made up of? It is made up of proteins. It is made up of various different type of salts. It is made up of variety of, or it consists of variety of hormones and cells. What is plasma? What are you supposed to write? What is plasma? Plasma is the liquid part of the blood. Remember, the liquid part of the blood is actually colorless. The liquid part of the blood that I am talking about, what did I say? The liquid part is known as the plasma, and the plasma is colorless. But now that I talk about the second component, the cells, and the first type of cell is the RBCs, the red blood cells. So what are some of the properties of the red blood cells to understand? What are some of the properties of the red blood cells? The red blood cells contain hemoglobin. The red blood cells contain hemoglobin. What is hemoglobin? Hemoglobin is a pigment. It is red in color. You have seen the beetroot? How many of you eat beetroot? You eat? Very good. Nowadays children don't eat beetroot. You all don't eat? Now she's saving herself. No, You don't eat beetroot. Why? When your mother gives you, just throw it away. She doesn't bring it home. I have to talk to her. Beetroot is very healthy. You should eat. The color of the beetroot you have seen exactly is the color of hemoglobin. So the more of beetroot you eat, the more of hemoglobin and more healthy you become. So now that we talk about one property of RBC that I am talking about, RBCs contain this hemoglobin. What is hemoglobin? It is a iron containing pigment. Iron is an element, mineral it is. And because it is iron containing, it is that reddish color. It has got that reddish purplish color, reddish, more strong reddish color. So one property of RBC I am talking about, it contains hemoglobin. Now something else to remember about the RBC. What is the function? For the different type of cells, you are only supposed to remember one or two properties and the function. Function about blood you are asked, function about the cells you are asked. So what is the function of RBC? RBC helps in transport of
Oxygen and carbon dioxide. That's the major function of the RBC to remember always. What is this RBC doing? What is the hemoglobin in the RBC doing? Picking up the oxygen from the lungs and depositing it to other tissues. Picking up the carbon dioxide from the tissues and bringing it to the lungs. That is the job. Next, 10th standard, we will learn the process. So we are talking about the red blood cells. Now, the red blood cells, what is the function I told you? Transport of oxygen, carbon dioxide. I talk about the next type of cells, and the next type of cells are known as what? White blood cells, also known as WBCs, the white blood cells. One feature, one property of the WBC cells, they are amoeba. You know what is an amoeba? What is an amoeba? A single-celled organism. What is so special about the amoeba that you have studied? It is flexible and it can change its shape, and it can sometimes become elongated, sometimes become round, no? And it has got the extensible membrane, pseudopodia, that it can form. Exactly, our WBCs also can do that. Since our WBC also can behave exactly like the amoeba, that's why it is known as amoeboid. Now, can you tell me one function of WBC? All of you are very much aware about this now. WBC function, it helps in, we are all COVID survivors. Don't ever forget that. What is the job? Helps in? Help in? Defense and immunity. All 1.5 years we had been eating food rich to boost our WBC so that we get immunity and don't suffer from COVID. Never ever forget that. We are talking about WBC. What is the function? WBC helps us in defense and provide immunity. Defense and provide immunity. The third and the last type of cells that we are talking about would be the platelets. Now, the platelets are small cell-like structures actually. They are not so well developed cells like the RBC, WBC, but then still, when I talk about the platelets, unlike other cells, they don't have the nucleus, they don't have any pigment, they are not colored, but still, they have a very important function to perform. And what is this function? This function is known as clotting of the blood. What is clotting of the blood? When should blood clot? When we suffer from a cut wound. When we go for a blood test and there's a puncture on our skin and the pathologist takes blood. Does blood come out from that small open area of the skin? Yes. And within how much time does the blood stop oozing? Few seconds to a couple of minutes. That is normal. But a person does not have enough number of platelets. What will be the condition? The process of blood oozing will continue. We all sometime or the other suffer from gum bleeding, yes or no? But if I talk about a person suffering from, if I talk about a person who has less number of platelets, the gum bleeding will be so serious. So what is the need of platelets? Bring about the process of clotting at the right time so that we don't lose unnecessary excess amount of blood. Complete the questions if you have not completed and tell me if any of the questions are doubtful to you. And we'll continue with the chapter. A little bit more is there in this chapter. We'll continue and finish next class. Let's be chapter take care. तेरे 3 स्टेप तुमने बोला 3 स्टेप पे किया तो मैंने तो बोला हाँ सच में